Okay, students, again from the past paper of numerical solution. This is question number 10 from your past paper 5 web. This is question number 10 from your past paper file, and it is from May, June 16. A diagram is given over here, और आपसे कहा गया the diagram shows the curve y equal to cosec x and the curve y equals to e power minus x. When x equals to a, the tangents to the curves are parallel. A पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए दोनों कर्व्स के साथ तो वो पैरेलल होंगे. In the first part, by differentiating 1 upon sin x, show that y equals to cos x का डेरिवेटिव किसके इक्वल है? इसके इक्वल है. करते हैं जनाब. किस तरीके से होगा? पहले हम 1 अपॉन साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. y इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं? साइन इनवर्स x. सो dy ओवर dx किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस साइन एक्स पावर -2 बेस का डेरिवेटिव cos x. सो क्या कहा जा सकता है? इट इज इक्वल्स टू माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर ऑफ x. हमने डिफरेंशिएट कर दिया किसको? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. डिफरेंशिएट कर दिया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. जब डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या डेवलप हुआ? माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x. हमें क्या प्रूफ करना है? बेसिकली 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन कॉसेक के ही इक्वल होता है. तो इट मींस हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हम बेसिकली कॉसेक को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड वी हैव टू प्रूव दिस. तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको लिखूं माइनस 1 अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय cos x अपॉन साइन एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. माइनस 1 अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस cosec x. और cos अपॉन साइन किसके इक्वल हो गया? cot के इक्वल हो गया. मींस 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन 10 इज बेसिकली इक्वल टू cot x. फर्स्ट पार्ट ऑफ 3 मार्क्स ये हमने प्रूफ कर दिया डिफरेंशिएट करके किसको? साइन इनवर्स x. आफ्टर दैट in the second part by equating the gradients of the curves, show that this. हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है x equals to tan inverse e power x over sin x. हमें ये प्रूफ करना है बिकॉज x is equals to a, तो इसको मैं x की फॉर्मेट में लिख रहा हूं. ठीक हो गया ना? कहा दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट कीजिए और दोनों कर्व्स के ग्रेडियंट्स को इक्वेट कर दें. नाउ इन द सेकंड पार्ट, द फर्स्ट कर्व y इक्वल्स टू cosec x, तो इसका ग्रेडियंट y इक्वल्स टू cosec x. पहला ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया? dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस cosec x cot x. ये तो पहला ग्रेडियंट. सेकंड कर्व क्या है? y इक्वल्स टू e पावर माइनस x. जब डिफरेंशिएट किया जाएगा dy ओवर dx तो ये क्या हो जाएगा? माइनस e पावर माइनस x. दोनों को इक्वेट करते हैं. माइनस cosec x cot x इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस x. अब आप देखिए, हमारा क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है वो tan और sin की फॉर्मेट में है. tan और sin की फॉर्मेट में है. हम इसको tan और sin में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्या इसको लिखा जा सकता है cosec को 1 अपॉन साइन? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है. और क्या cot को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 10? जी बिल्कुल.
तो क्या हम इसको कह सकते हैं इट इज इक्वल टू साइन एक्स tan x इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर या साइन एक्स को यहीं रखिए, चले मैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन एक्स टेन एक्स इक्वल टू 1 ई पावर माइनस एक्स, और 1 ई पावर माइनस एक्स बेसिकली किसके इक्वल होगा, साइन एक्स टेन एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक हो गया। अब टेन एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स को लेफ्ट साइड पर रहने दीजिए, टेन को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ई पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, and this we have to prove. Is this clear? After that, in the third part, verify by calculation that the root lies between 1 and 1.5. तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, किसको, आइटरेटिव फॉर्मूला को। ये आइटरेटिव फॉर्मूला बन गया, क्योंकि आइटरेटिव फॉर्मूला कैसे बनता है आपको फर्स्ट क्लास में बता चुके। अगर लिखा हुआ हो x इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ x, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, आइटरेटिव फॉर्मूला। और यही कंडीशन नजर आ रही है, एक साइड पर x, दूसरी साइड पे मजीद फंक्शन ऑफ x। तो आइटरेटिव फॉर्मूला को की हेल्प से अब हमें ये प्रूफ करना होगा रूट लाइज बिटवीन 1 and 1.5। तो हम बना सकते हैं इसको फंक्शन x माइनस tan इनवर्स, टेक आउट योर कैलकुलेटर्स, e पावर x ओवर साइन x। कैलकुलेटर इन रेडियंस, जरा मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ f1, और कोई और कैलकुलेट करे व्हाट इज द आंसर ऑफ 1.5। चलिए -0.2 लेस देन 0, 1.5, नो 0.1, यस, ग्रेटर देन 0, यस, प्रूफ हो गया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव प्रूफ करना था, हमें प्रूफ हो गया। ठीक हो गया। इन द फोर्थ पार्ट 5 डेसिमल प्लेसेस तक आइटरेशन लिखनी है, 3 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर देना है। एक्स नॉट मैं कंसिडर कर रहा हूं 1, तो जरा मुझे बताइए व्हाट इज x1 इस आइटरेटिव फॉर्मूला में रखते हुए, जो ये आइटरेटिव फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। व्हाट इज x1, 1.27059, x2 30884, x3 31556, x4 31677, x5 1.31699। प्रूव हो गया, 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आ गया, देयरफॉर x is 1.317। Is this clear? Hopefully there is no confusion. In the question of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marks, 10 marks का क्वेश्चन दिया गया। सिर्फ पार्ट 1 में थोड़ी सी आपसे डिस्कशन की, बल्कि पार्ट 1 भी कोई इतना डिफिकल्ट था नहीं, पार्ट 2 भी इसका इजी ही था। तो now question number 14, it is from October November 15। पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको दी गई, उनसे हमें the point P on the curve has parameter this, it is given that the gradient of the curve is 4, हमें ये प्रूफ करना है।
The first x equals to t square plus 3t plus 1. So dx over dt will be 2t plus 3. And now dy over dt will be 4t cube. Now dy over dx is dy 4t cube over 2t plus 3. ये आपके पास dy over dx आ गया. ये आपके पास dy over dx आ गया, right? 4 से dy over dx is 4 equals to 4t cube over 2t plus 3. 4 and 4 cancel out. 2t plus 3 equals to t cube and t equals to cube root of 2t plus 3. So therefore, we can say that p equals to cube root of 2p plus 3. After that, in the second part, we have to verify. So now, अब हम क्या लिख सकते हैं? F of p equals to p minus cube root of 2p plus 3. So what is f of 1.8? What is f of 1.8? 0.07 positive आया. What is f of 2? What is f of 2? Minus 0.08 negative आया. Yes. Now after that 4 decimal places पर iterative formula use करते हुए 2 decimal places पर आंसर देना है. x नॉट अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं और दूसरा वाला तो गलत आया ना. ये करेक्ट है ना? हाँ सही. x नॉट इज 1.8. so what is x1? बेटा this is minus 0.07 and this is plus 0.08. That's great. Now x naught is 1.8. So what is x1? According to the iterative formula, according to this iterative formula of part 1. Yes, what is x1? एक मिनट. Up to 4 decimal places, 1.857. Okay, next x2. 1.8900. Okay, x3. 8926. आगे आंसर. Therefore, the result is x equals to 1.89. This is the final answer. Yes. Hopefully it is clear. Right? Now, question number 15. May, June 15. In the first part, we have to calculate the gradient at origin. So x equals to 2 ln t plus 2. अब आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन तो ऐसे ही बदनाम हो गया. The first part is about differentiation. It's not about numerical solution, right? So dx over dt equals to 2 over t plus 2. Now y equals to t cube plus 2t plus 3. So dy over dt equals to 3t square plus 2. So dy over dx is 3t square plus 2. dx upon में आएगा means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t square plus 2 plus 2 upon 2 means 3t s
रिवर्स इसको लिखा जाएगा तो t plus 2 here divided by 2. Now, what is the value of t when x is 0? x0 equals to 2 ln t plus 2 ln t plus 2 equals to 0, taking e on both the sides. So t plus 2 equals to e power 0 is 1. So the value of t is minus 1. When t is minus 1, what is the value of dy over dx gradient? It is 5 over 2. It is 5 over 2. This is part 1. Now, in the second part, at the point P on the curve, the value of parameter P, it is given by the gradient of the curve, P equals to half. ठीक हो गया. Means, gradient of किसके equal दे दिया इन्होंने? It is given that the gradient of the curve is half. So it means in the second part, 2a half equals to 3t squared plus 2 t plus 2 divided by 2. So it will be 2 and 2 cancel out. 3t squared plus 2 equals to 1, and here it is t plus 2. Now, t plus 2 equals to 1 upon 3t squared plus 2. And what is t? 1 upon 3t squared plus 2 minus 2. But replace t with p, so it will be 1 upon 3p squared plus 2 minus 2. This we have to prove. क्या बन गया ये आइटरेटिव फॉर्मूला? एक p लेफ्ट पर और बाकी तमाम p's राइट पर. इन द बी पार्ट 5 डेसिमल प्लेसेस पर आइटरेशन लिखना है, 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर देना है. सो नाउ व्हाट इज x नॉट? व्हाट इज x नॉट? x नॉट इज नॉट गिवन, कुछ भी रख सकते हैं. आई एम टेकिंग इट -1. सो व्हाट इज x1? Not x, it is basically p. Yes. By -1, what is the value of p1? Yes. Calculate. -1.8. What is p2? आगे बस यहां पर खत्म. 4, 6, 7 up to 5 decimal places हमें लिखना है. What is p3? 92306. What is p4? 363. Therefore the answer is -1.92. Is this clear? Any confusion? Yes, this is the iterative formula. What is the value of x? The value of x is -1.92. If the value of x is -1.92, then what is the value of t? 2 ln t plus 2. So it will be ln t plus 2 equals to, beta, -1.92 divided by 2 is -1.92 divided by 2 is 0. So t plus 2 is e power -0.96, and the value of t is e power -0.96 minus 2. Replace this t in y equals to t cube plus 2t plus 3, and what is the value of y? जरा value of y बताइएगा. ये t रख दीजिए इसमें. What is the value of y? Here in this.
In this, replace P with minus 4.46. So minus 1.92 and minus 4.46 are the coordinates for P. Is this clear? Now,